So we were doing the Peninsular Plateau region, and in the Peninsular Plateau, I guess I discussed with you Karnataka Plateau. So the Karnataka Plateau is divided into two types, that is the Maidan and Malnad. Maidan is a flat land, it has a rolling topography. Why it has a rolling topography? Because it is made up of Archean gneiss and schist, and those rocks have not been properly eroded because they are tough rocks. So as a result of this, ऊपर नीचे की तरफ है. This is what is the rolling topography. अब वहाँ पे लिखो agricultural development or agro processing industries in the Karnataka Plateau region. Or regional development of the Karnataka Plateau region. Regional development of the Karnataka Plateau region. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली रीजनल डेवलपमेंट या कंपैरिजन में भी आ सकता है. आई यूज योर विजडम कि किस में क्या लिखना है. फाइन. अगर क्वेश्चन आता है ओनली इन द फिजिकल ज्योग्राफी तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन आई से द कर्नाटका प्लाटू, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक नॉर्थ कर्नाटका है. So there are different parts of the Karnataka Plateau. One is the shaded part, this is the other part, this is the other part, and this is the other part. In तीनों का regional development is going to be different. In the first part there is a presence of black soil. In the second part there is a presence of, second and third part there is a presence of red and yellow soil. Why red and yellow soil? Because it is made from Archean rock system. So जहाँ जहाँ इंडिया में there is an Archean rock, we have the presence of red and yellow soil due to the dominance of iron. Shaded part is Malnad, that is the hilly region. But मैंने second and third part, though it is similar, मैंने इसलिए divide किया है because third part is what is known as Mysore Plateau. So tell me, how is the regional development going to be different? मैसूर में क्या क्या हो सकता है in the terms of regional development? क्यों अलग हुआ है? So you have to understand. अलग इसलिए हुआ है वेस्टर्न घाट्स, Palghat Gap, Mysore Plateau, Karnataka Plateau region. In this actually is a rain shadow region, but through this gap the northeast monsoon can enter, and because of the Mysore Plateau it is forced to climb up, and therefore it gives good rainfall over here. Because it gives good rainfall over here, can I say this region is good for agriculture? But agriculture से ज़्यादा important, this region is good for tourism industry. Regional development है यहाँ पे. there is a scope of a tourism industry in the Mysore Plateau region. There is a scope of further industrial development because Bangalore and Mysore are already an industrial centers. Fine. Second part में अगर irrigation मिला तो ही it can be used for agriculture. And what will be the important source of irrigation here? है या नहीं irrigation? Yes, irrigation is there through the presence of Tungabhadra Dam, Tungabhadra Reservoir on Tunga and Bhadra River, which is a tributary of Krishna, River. So, एकदम जोश में she gave the answer after long time. So, secondly, we have the presence of ये जो canal system जो हमने कल डेवलप किया, कल पढ़ा था रंगनाथिट्टू लेक के आसपास, that is Shivasamudram Islands, and we also have the political representation of the Mysore region or of the Bangalore region, either coming from this, that is this is the part जहाँ से political representation आता है, या it comes from this part. So right now जो CM है, it is from this part. Right?
तुलु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु स्पीकिंग से ज़्यादा तुलु स्पीकिंग पीपल, कन्नड़ स्पीकिंग से ज़्यादा तुलु स्पीकिंग पीपल. Whether it is who is the present CM? Yedurappa. Whether it is SM Krishna and HD Devegowda या कुमाराम Rangaswamy, ये जो बाकी के हैं, this come from this region. SM Krishna is basically from South Karnataka. Fine, South Karnataka वैसे ही rich है. So देवेगौड़ा की फैमिली कम्स फ्रॉम दिस रीजन, येडुरप्पा की फैमिली कम्स फ्रॉम दिस रीजन. हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी पॉलिटिकल फैमिलीज, बट यू शुड नो व्हाइल राइटिंग द आंसर कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट. बेसिकली दिस पीपल आर ऑलवेज रिच, वेदर इट इज दिस पार्ट या दिस पार्ट, एक ही है. फाइन. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड शेट्टी कम्युनिटी. Shetty, Sunil Shetty, Aishwarya Rai. So all this is the Shetty community. Yes. All this is the Shetty community who dominate the hotel industry in India. 99% of the hotel industry in India, except for corporate group of hotels, belong to the Shetty community. So वैसे भी they are very very rich. Fine. So यहाँ पे when we write the answer, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करके या इरिगेशन देके इसको डेवलप करना है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, एंड इसको भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स देके डेवलप करना है. सो आई एम गिविंग यू द कर्नाटका प्लाटू. कर्नाटका प्लाटू हैज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल इन द नॉर्थ, has a mixture of black soil in the north and Archean rock based red and yellow soil in the south. The southern part of Karnataka plateau is known as Mysore plateau. The southern part of Karnataka plateau is known as Mysore plateau. And it being at an height of 2,600 feet, receives good rainfall. The further resource development in this region includes one, metallic minerals of Dharwar rock system, which includes iron ore of Baba Budan Hills, कौन सा है बाबा बुदान हिल्स में आयरन और कुद्रेमुख, iron ores of Baba Budan Hills. Second, Kolar gold field
देखो विद द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड में गोल्ड नहीं है, बट विद द न्यू टेक्नोलॉजी वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग गोल्ड अगेन इन दैट रीजन. फाइन, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब विद द न्यू टेक्नोलॉजी कोलार गोल्ड फील्ड हैज अगेन गोल्ड. थर्ड, मैसूर प्लाटू का पार्ट है टेक्निकल, मैसूर प्लाटू का पार्ट है, स्ट्रेट नहीं है ना मैसूर प्लाटू, ऐसे ऐसे आएगा. मैसूर प्लाटू मतलब धारवाड़ सेडिमेंट्स प्रॉपर. हाँ, आर्कियन नीस एंड रॉक मतलब सेंट्रल कर्नाटका, आर्कियन नीस एंड शिस्ट जो धारवाड़ सेडिमेंट्स बने नहीं है. एंड ब्लैक सॉइल मीन्स नदर्न कर्नाटका. द वर्ड कर्नाटका मीन्स द लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल. कर्नाड मीन्स ब्लैक, बट ब्लैक सॉइल है सिर्फ नदर्न कर्नाटका में. थर्ड, industrial development around Bangalore, industrial development around Bangalore, which consists of software industry, engineering goods industry, comma, precision industry, etc. Tourism, comma, hydropower development on the rivers originating from the Western Ghats, next point, the central South Karnataka, which consists of Mandya district, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, I will take only Mandya district, is important sugarcane growing region, but the problem is irregular rainfall. Lack of physical as well as social infrastructure. And hence this region is having the lowest per capita income in Karnataka. This region is having lowest per capita income in Karnataka. But still, proper utilization of river Kaveri can be used for irrigation
and agricultural diversification. And agricultural diversification can be used for irrigation and agricultural diversification. Third, North Karnataka. Central. Mandya is the adjacent district of Mysore. How it can be? साउथ सेंट्रल इसलिए तो दिया है, साउथ सेंट्रल में माना जाता है उसको. Sir, if you consider Bangalore as a part of this plateau and Mysore, then Mandya should come. मांड्या एडमिनिस्ट्रेटिवली इज कंसिडर्ड एज अ साउथ सेंट्रल पार्ट. मांड्या नहीं आता साउथ, उत्तर कर्नाटका में नहीं आता, सॉरी दक्षिण कर्नाटक में नहीं आता. जाके चेक करना घर पे. मैं कह सकता हूँ Mandya दक्षिण में आता है डिस्ट्रिक्ट में. मांड्या होगा साउथ में. मैं आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का दे रहा हूँ जिसमें इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट इन द प्लानिंग मॉडल. When you do regional development and planning, you just don't do it on the basis of कि लोकेशन. रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हम देखते हैं रिच डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा है, इसलिए तो हमने साउथ सेंट्रल लिखा है. रीजन्स को हमने वो किया है. लेकिन वो प्लेटो के हिसाब से अगर हाँ, प्लाटू के हिसाब से नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से तो साउथ में है. कंसेप्ट ऑफ रीजन, पुअर रीजन, रिच रीजन, प्लान्ड रीजन, उसमें आता है. हाँ, रिच और पुअर, ज्योग्राफी के लिए हिसाब से नहीं, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट है ये. थर्ड, द उत्तर कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका. उत्तर और नॉर्थ कर्नाटका is a semi-arid region. Is a semi-arid region. ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट बेलगांव. एक्सेप्ट बेलगांव. It is a region of black soil. It is the region of black soil. Full stop. It is drained by numerous rivers such as Krishna, Bhima, Ghatprabha, Malprabha and Tungabhadra. तुंगाभद्रा, ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है. भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना. तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा कौन से कहाँ से जाती है, कौन से हिस्टोरिकल साइट से? हम्पी. इट गोज थ्रू हम्पी. क्या है हम्पी? हाँ, क्या कौन सा टेम्पल? सबसे बताओ मुझे, रॉक कट आर्किटेक्चर या किस में? रॉक कट किसका? दो फेमस टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल एंड विट्ठला टेम्पल हम्पी में. बस दो ये इंपॉर्टेंट है, विरूपक्षा टेम्पल एंड विट्ठला टेम्पल. हम्पी फेवरेट है उनका. Next,
due to the drought prone or dry zone agriculture, due to dry zone agriculture, this region has seen maximum farmer suicide in Karnataka. This region has seen maximum farmer suicide in Karnataka. It is a region of cotton. It is a region of cotton, ragi, R-A-G-I, ragi. And sugarcane cultivation. वैसे सबसे ज़्यादा sugarcane cultivation in central Karnataka and sugarcane cultivation. There is a demand of this part, the northern Karnataka. What was I dictating? This part is also facing a dispute between Maharashtra and Karnataka. This was is also facing a dispute between Maharashtra and Karnataka. Facing a dispute between Maharashtra and Karnataka. Fine. Telangana Rayalaseema nahi karna hai hame. Just 2-3 things you should remember, that Telangana and Rayalaseema region is again a region of Kadapa sediments and Archean gneiss and schist. So climate kaisa hai yahan ka? Semi-arid. Which is the most important river here? Godavari, Krishna and Penneru. These are the 3 important rivers in this region. And fourthly, what about the agriculture, regional development and planning? Ki Telangana is a separate state. So this part will not come in this thing. Now Telangana plateau and Rayalaseema plateau geologically are the single plateau. Telangana upar, Rayalaseema niche. But politically Telangana became a separate state and Rayalaseema and coastal Andhra Pradesh have become a separate state. So today you see how the coastal Andhra Pradesh is. चालू हो गया ना? नहीं हुआ भाई, चालू नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं आएगा वो। इसका ऑटोमेटिक अपडेट कहाँ से बंद होगा, किसी को पता है? वो तो बंद कर दिया। तो बस अभी कुछ करना ही नहीं। किसका कीबोर्ड? बनु के पास ले जाना, करके देगा।
तेलंगाना रायलसीमा रीजन, कोस्टल आंध्र प्रदेश. अब कैसा है द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र एंड द रायलसीमा part. Fine. So 2-3 points regarding the Telangana Rayalaseema region. First, it is a part of Deccan. It is a part of Deccan dominated by Archean basement rocks. Understanding why the word basement? Archean basement rocks, comma, Kadapa sediments, and Vindhyan limestone, Major part of this plateau is highly dissected. Dissected मतलब eroded by Godavari Krishna and Penneru river system, The central part of this plateau, especially Telangana, lies in the rain shadow effect of Western Ghats. The proposed interlinking of rivers, will help in extending the irrigation facilities, to this dry region. Okay. Bundelkhand uplands. Okay. Bundelkhand uplands. Light one. See, this is the Telangana Rayalaseema Plateau region. Godavari, Krishna, Penneru river system. और ये सिर्फ है नियर द सी लेवल, बाकी का पूरा रीजन इज ड्राई. कडप्पा रॉक सिस्टम.
पूरा ड्राई है, आर्कियन रॉक्स या कडप्पा रॉक सिस्टम डोमिनेटेड बाय द लाइमस्टोन. वन पॉइंट आई फॉरगॉट देयर इज the industrial development in this region. The industrial development around this in this region is around the building materials, especially the cement industry, especially the cement and infrastructure industry. Especially the cement and infrastructure industry surrounding the Kadapa rock system. Surrounding the Kadapa rock system. Surrounding the Kadapa rock system. कोई यहाँ पे बुंदेलखंड से कोई नहीं है बुंदेलखंड में. So you are from South UP. So Bundelkhand, UP and MP. No, not you. So this is what is the Bundelkhand. Can you tell me क्या क्या आएगा इसमें? Climate, geography, agricultural development and industrial development. क्या क्या है? एग्रीकल्चर क्या है वहाँ पे? बाजरा. That is, it is a region of wheat after the Green Revolution, but mostly it is a region of hard cereals or millets. क्यों बाजरा? क्यों होगा बाजरा? Tell me. Because rainfall is very heavy or rainfall is less rainfall. Soil will be fertile or soil will not be that much fertile. Soil will not be that much fertile. Why the soil is not fertile? Because it is not alluvial plain. It is peninsula. A peninsula में fertile soil है, that is a black soil, but it is not a region of a black soil. The region of a black soil is Malwa plateau, जो बुंदेलखंड के just नीचे है. This is the Malwa plateau वाला region. Fine. And because of dry region, यहाँ पे what do you see here is the main rivers are Sindh, Betwa, Chambal, Dhasan. Dhasan is a tributary of Chambal. And this region is highly prone to the soil erosion in India. And this is therefore, this is drought prone region of India. Highly drought prone region of India. But this region is important in the terms of tourism. Development in the terms of tourism, because this region has the famous Khajuraho temples. Gwalior is also located in this region. ग्वालियर नहीं है इस रीजन में? चलो ग्वालियर को हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है खजुराहो टेम्पल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द खजुराहो टेम्पल्स. एंड हमें लिखना है विच इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली. विच टू? केन एंड बेटवा. केन एंड बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव वाटर टू दिस रीजन. फाइन. सो बुंदेलखंड रीजन, it includes some districts. It includes both MP and UP. It includes both MP and UP. Includes both MP and UP. It is a drought-prone region of India. It is a drought-prone region of India.
because it lies in the rain shadow region. Because it lies in the rain shadow region, as the monsoon winds enter the rift valley of Vindhyas and Satpuras. As the monsoon winds, ये सब नोट्स में नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ये सब. As the monsoon winds enter the rift valley of Vindhyas and Satpuras. Geographically, Bundelkhand lies between Yamuna in north and Vindhyas in the south. Bundelkhand lies between Yamuna in the north and Vindhyas in the south. Geologically, it is made up of Archean gneiss and schist. Geologically, it is made up of Archean gneiss and schist. But this region is highly dissected and eroded. This region is highly dissected and eroded by Chambal, Betwa, Sindh and Kain. Chambal, Betwa, Sindh and Kain. It suffers from malnutrition, low agricultural productivity, and large scale migration, especially to Delhi. Right or wrong? Delhi के आसपास, because it is very near to Delhi. Future development depends upon exploiting the tourism potential, especially around Khajuraho. Second, developing irrigation projects based on interbasin river transfer, example Kain Betwa link.
cane betwaling. Next, controlling soil erosion. Controlling soil erosion. And fourth, high potential for allied activities such as goat farming. Allied activities such as goat farming. पोल्ट्री फार्मिंग पता है? यू नो व्हाट इज गोट फार्मिंग? सेम लाइक पोल्ट्री फार्म की गोट फार्म्स आ रहे हैं आजकल, ये सबसे अपकमिंग फील्ड है इंडिया में, गोट फार्मिंग. एंड ये जो ड्राई रीजन्स है इंडिया के, यहाँ पे सबसे हाई पोटेंशियल है गोट फार्मिंग का. एंड वैसे भी इंडियंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर नॉन वेज, सो देयर विल बी हाई पोटेंशियल फॉर गोट फार्मिंग इन दिस रीजन. सोलर एनर्जी का भी है, यस, बट मैंने ऐसे कहीं पढ़ा नहीं है कि इस रीजन में सोलर एनर्जी डेवलप करो. ये जो हम है, ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बुक्स में जो दिया है वही लिख रहे हैं. Government wants industrialization in this region, that's why they are planning that NMIZ also coming in Jhansi and all. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या वहाँ पे? Heavy electricals. हेवी इलेक्ट्रिकल्स. Like Jhansi is already the center of rail. Government plans to put more. है, डेवलपमेंट है. Jhansi is like एंड लास्ट, छोटा नागपुर प्लाटू रीजन. छोटा नागपुर प्लाटू रीजन. छोटा नागपुर प्लाटू रीजन. इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला. Northeastern projection of Indian peninsula. Having complex geology. Having complex geology. Full stop. By complex geology, it is a mixture of Archean gneiss and granite. It is a mixture of Archean gneiss and granite, comma, Dharwar sediments, comma, Gondwana rocks, and Cretaceous lava flow. ब्रैकेट में राजमहल हिल्स. याद रखना, राजमहल हिल्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन. Cretaceous lava flow. It extends in the states of West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh. Extends in the state of West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, and northeastern Andhra Pradesh. It is surrounded by Indo-Gangetic plains. To the north and the east.
in north and the east, and Mahanadi Basin to the south. Can you draw a diagram showing Chota Nagpur Plateau? डेक्कन प्लाटू के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी ऑन द छोटा नागपुर प्लाटू. फिर से हैंग हो गया. उसको मनु को बोला अपडेट पे लगा दे या क्या करना तो फिर चेंज कर दो. हाँ. Can I continue? It is a region of polycyclic relief. It is a region of polycyclic relief dominated by flat topped hills or flat topped plateaus. Flat topped plateaus known as पट. जियोमॉर्फोलॉजी में हमने किया है ये पटलैंड known as पट. सो याद रखना कोई भी मैप पॉइंटिंग आता है पट से XYZ इज पट, नेहार पट, देगाना पट, तो याद रखना छोटा नागपुर प्लाटू, फ्लैट टॉप रिलीफ, इट इज़ अ रीजन ऑफ वाटरफॉल्स, इट इज़ अ रीजन रिच इन आयरन और कोल. बस बात खत्म. फाइन. it represents the fall line of India. It represents the fall line of India. FALL, fall line of India. Dominated by waterfalls. Dominated by waterfalls. Example, remember this for map pointing. Hundru Falls. Hundru Falls. Hundru Falls. Jharkhand. Hundru Falls, Jharkhand. 2-3 points. It is a Nick Point Fall. ब्रैकेट में Nick Point Fall, सिर्फ पॉइंट्स में लेना. Nick Point Fall. Nick Point Fall means rejuvenation has occurred. It is an example of rejuvenation. KNICK, Nick Point Fall.
And third, on Subarnarekha River. Subarnarekha River. Second example, Dasam Fall. Dasam Fall. Jharkhand. Kanchi River. Which is a tributary of Subarnarekha. Again, Nick Point Fall. Raja Rappa Fall. Raja Rappa Fall. South India. Raja Rappa. Damodar. At a confluence of Damodar and Behra River. At a confluence of Damodar and BEHRA, Behra River. Behra tributary है दामोदर की. Very near to Bokaro, Steel City. Very near to Bokaro, Steel City. And Ramgarh, 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 coalfield. Ramgarh coalfield. And सबसे important, गौतम धारा फॉल. गौतम धारा फॉल या जिसको कहते हैं जोन्हा फॉल्स. जोना फॉल्स. निक पॉइंट फॉल, ये सारे निक पॉइंट फॉल है, सारा रिवर रिजुविनेशन है. पॉलीसाइक्लिक रिलीफ मतलब सारा रिवर रिजुविनेशन. on Gunga River, GUNGA, Gunga River. हजारीबाग. ये सारे रांची प्लाटू के फॉल्स हैं. गुंगा रिवर. It is known as Gautam Dhara. It is known as Gautam Dhara. Because of religious importance. Because of religious importance. Right? ये इतना डिटेल में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट, द छोटा नागपुर प्लाटू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो प्लाटूज. is further divided into micro plateaus such as Ranchi Plateau, the source of origin of river Damodar,
दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। हजारीबाग प्लाटू, हजारीबाग प्लाटू, कोदरमा प्लाटू, HAZARIBAUGH, हजारीबाग प्लाटू किसके लिए फेमस है? हजारीबाग प्लाटू, ये पूरा रीजन किसके लिए फेमस है? फॉरगेट हजारीबाग। कोदरमा प्लाटू, स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन ओर। कोडरमा प्लाटू, KODERMA, कोडरमा प्लाटू। पलामू, पलामू प्लाटू रीजन, पलामू, PALAMU, पलामू प्लाटू रीजन, drained by Son river, drained by Son river. It is also famous for, it is also famous for इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेतार हाट, आई वुड हैव शोन यू दिस, नेतार हाट, नेतार हाट, नेतार हाट में लिखना पटलैंड, पटलैंड, it is known as Queen of Chota Nagpur Plateau because of tourism. It is known as Queen of Chota Nagpur Plateau due to tourism. This has come in map pointing thrice, Netar Hut. It is famous for पलामू टाइगर रिजर्व, कौन से स्टेट में? झारखंड। इट इज फेमस फॉर पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। एंड बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सिंहभूम रीजन, सिंहभूम रीजन, सिंहभूम किसके लिए फेमस है? नहीं, सिंहभूम इज फेमस फॉर कोल। ऊपर के सारे फेमस फॉर आयरन और सिंहभूम इज फेमस फॉर कोल। सिंहभूम रीजन विच इंक्लूड्स Purulia of West Bengal, includes Purulia of West Bengal,
which includes the Purulia district of West Bengal and Dhanbad Bokaro region. Dhanbad Bokaro region of Jharkhand. Bokaro region of Jharkhand. Climate. The छोटा नागपुर प्लाटू का क्लाइमेट कैसा है? Someone that day was telling me छोटा नागपुर का क्लाइमेट from our class only. कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, कैसा है छोटा नागपुर प्लाटू का? Pleasant. So the climate. This Chota Nagpur Plateau region receives 140 centimeters of average annual rainfall. 140 centimeters of average annual rainfall, and it is dominated by tropical dry deciduous forest. It is dominated by tropical dry deciduous forest. It is rich in wildlife. It is rich in wildlife. Which includes the protected areas of Sanjay Gandhi National Park. Tell me the state. Chhattisgarh. Sanjay Gandhi National Park, Chhattisgarh. Sanjay Gandhi National Park, Chhattisgarh. Second, Maharashtra में भी है, but it is not important. Chhattisgarh. Simlipal National Park. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है. कौन सा स्टेट? ओडिशा. सिमलीपाल नेशनल पार्क, ओडिशा. गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कौन सा स्टेट? थोड़ा दिमाग लगाओ. गौतम बुद्ध, बिहार. गया के पास. सॉरी, गया इज इन बिहार, नॉट गया के पास. गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार. कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झारखंड. और जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, दालमा वो सब तो पता ही है आपको. रमना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रमना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाल. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लैक बक relocation project has taken place here. Bengal. Black buck relocation project has taken place here. Industrial development. It is rich in mineral resources, right from coal, iron ore, bauxite, and hence was considered as a region of
a region of growth pole during second 5-year plan of India. Hence was considered as the growth pole during the second 5-year plan of India. फाइन, ये हो गया हमारा ऑप्शनल का. मुझे बताओ ट्राइब्स यहाँ पे है या नहीं. संथाल, यस. हो, मुंडाज और गोंड्स, यस. फाइन. सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है. ओरान भी है यहाँ पे ट्राइब. ईस्टर्न बिहार, झारखंड, सेंट्रल झारखंड. बंगाल में तो नहीं हो सकता है, ये नहीं पता मुझे. मोस्टली क्रिश्चियंस, मोस्टली क्रिश्चियंस. ओरान ट्राइब हैज मोस्टली टेकन क्रिश्चियनिटी. हो इज द ओनली ट्राइब जिसका कोई रिलीजन नहीं है. वो आज भी एनिमिज्म करता है इंडिया में. टेक वन क्वेश्चन. Distinguish the geographical aspects of north western lava plateau and Chota Nagpur plateau of peninsular India. Distinguish the geographical aspects of northwestern lava plateau and Chota Nagpur plateau of peninsular India, 2018. Northwestern lava plateau and the peninsular plateau of the northwestern lava plateau and the Chota Nagpur plateau of peninsular India, 20 marks, 2018. जस्ट मुझे ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दो. इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में कैसे, कौन सा डायग्राम, एंड लास्टली क्या कंक्लूजन एक्सेट्रा.
linseed, Virginia tobacco, sunflower, etc. Large variety of fruits and vegetables are also grown. Fine. कितने simple words में answer? In her first attempt, she has got a 356 rank. She is right now in, but उसको क्योंकि IAS के लिए उसको पता था कि IAS तो इस साल मिलेगा नहीं सर, her fourth choice was Indian Audit and Accounts, so she is right now in Indian Audit and Accounts Service. I'll give you your model answers, कुछ अच्छे, कुछ अपने क्लास के हैं, कुछ मार्केट से है. Fine. So this is how you have done the structuring of the answer. The Peninsular Plateau is divided into numerous divisions, which out of which Chota Nagpur Plateau and Maharashtra Plateau is one. Diagram आएगा divisions of the Chota Nagpur Plateau. फिर body of the question will be, body of the answer will be, so obviously in the introduction, this is the oldest and the most stable landmass in the world. It is a part of Archean rock system. फिर body में आएगा the Chota Nagpur Plateau and Maharashtra Plateau. The Chota Nagpur Plateau is dominated by Archean rocks, Gondwana rocks, Cretaceous lava flow, as well as Kadapa and Dharwar sediments. On other hand, the Maharashtra Plateau or the northwestern Deccan Plateau, Deccan Plateau is dominated by the Cretaceous lava flow. This plateau was formed during the movement of Indian plate over the Reunion hotspot, and it is known as, it is a kind of a fissure eruption which caused the spread of lava for 10 lakh square kilometer up to the northwestern India. But today it is found only in the western India because it is reduced to half of its size. इसलिए question में है northwestern, so you have to justify the word northwestern. Fine. Next, climate. The Chota Nagpur Plateau का क्या climate है? More than 140 centimeters of rainfall. It has the source of origin of numerous rivers. It is a region of wetland. While the Deccan Plateau falls majorly in the rain shadow region, and therefore though major rivers flow through this region, it receives less than 70 centimeters of average annual rainfall. फिर densely forested कौन सा है? Chota Nagpur Plateau. ये कैसा है? Semi-arid region. It is not densely forested. And agriculture में Deccan lava plateau में mostly cash crops, and वहाँ पे mostly Chota Nagpur Plateau में rice. Chota Nagpur Plateau में mostly rice. खत्म आंसर. Fine. एक conclusion में ये लिख सकते हो that due to the locational aspect, Chota Nagpur Plateau is more important for core industries such as iron and steel industry, while the Deccan Plateau is more important for textile industries. Getting it? Holistic answer होगा. लिख पाए ऐसा? Right? And can you now compare any plateaus? Meghalaya Plateau and Chota Nagpur Plateau, बुंदेलखंड Plateau and Chota Nagpur Plateau. समझ में आया क्या क्या पॉइंट्स होंगे आंसर में? Geography, climate, economic importance in the terms of agriculture, economic importance in the terms of industries. खत्म. Fine.
East and West coastal plains of India. We'll shift to that classroom after you finish drawing. और 7 लाख कोर्स से भी ज़्यादा फॉलो करना होगा तो ये शिफ्ट करना है क्लासरूम में आवाज